ट्रैफिक रूल्स मान रहा हूँ तो मैं देशभक्ति कर रहा हूँ। Somebody to prove her worth, to come find her own feet. खुद के हुनर में विश्वास नहीं रखेंगे, लोग आपके हुनर में विश्वास नहीं रखेंगे. The way that she was brought up, gender barriers and social norms about gender were never an obstacle in her mind. जानवी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी. मैंने कभी जानवी को पूरी शूट में रूम ही नहीं दिया. Wonderful morning to all of you from Bollywood Hungama and me. Good morning, sir. Thank you. Good morning. Good to see you. Morning. Good morning. Thank you. So, Sharan, first question to you. Yes, sir. What was, where did you get the genesis of this story idea that you want to make it as your first film? So, Faridoon, sir, actually, I just very randomly stumbled upon an article about Gunjan ma'am. What's interesting is that Gunjan ma'am's story, luckily for me, nobody picked it up after that. And to come across that article, which kind of really interested me and caught my brain, which just said that she was 24 at the time of Kargil and she flew these rescue choppers, rescuing Indian soldiers. Her brother was in the same time in the army with her in Kargil, and her father was also in the army. That's all that was written really. And it caught my attention. There was something about it that it intrigued me. And I took the article to Karan sir actually with the intention that, sir, somebody should research it. Somebody could make a good film on this. And he backed me and said, why don't you go research it, you know? So he just said, go. And I went to meet Gunjan ma'am a little bit unsure as to how I would be able to understand her story and tell her story, because I'm somebody born and brought up in Mumbai. Not too much knowledge of the Air Force world or the Defense Force world. But when I went to meet Gunjan ma'am, I was so pleasantly surprised by her personality, who she was, and how we kind of really got along very instinctively. Her outlook to her life, the way her family dynamics are, her dynamic with her father, her dynamic with her brother, how she was just this girl with a dream, with a kida as she describes it, about wanting to fly. And somehow when I went there, her entire outlook to life and her journey hit home with me at a very personal level, you know. So there was something about it which just sucked me in. And from there on, it felt very organic, because while I went there with some skepticism about me not knowing her world, I think as two human beings, we really connected and it hit home. Her story felt very personal to me, went very organically from there on, sir. I saw the film. I cried at the end of it. I thought Janhvi was really good throughout the film, especially the climax. But what I personally really liked was that the entire approach towards making it is very professional. In the sense, you stick to the context of the girl and what she goes through and how she overpowers that. You celebrate the country, but you don't resort to jingoism. It's not a high decibel film from that context. Personally, that connected with me a lot. How important was it for you to stick to the context and be professional about it? Like on a first film, very often you kind of you don't know so much. So in a way, all you can rely on is your honest feeling. You kind of do what your inner voice tells you. So that was the entire tone of the film. And to be very honest, everything the tone of the film is really the tone of Gunjan Saxena ma'am and her outlook to life. The depiction of patriotism is her thoughts on patriotism. It's very much in sync with Gunjan ma'am's personality, and I think that's where you get lucky when you kind of are making a film on a true story where the central character, their personality defines the personality of the film. So I think we just try to stay true to Gunjan ma'am's personality and her outlook on life. मैं बढ़िया सुरक्षित हूँ। Faridoon, sir. हाँ, उसको दिखाओ तो सही, वो देखना चाहती है सबको। आपको दिखाऊंगा मैं पंकज सर, वो बहुत मतलब कि उतावली है। हाँ, तो उसको बहुत शरारती है। पंकज भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिल्म पे जो मुझे लगता है कि उसके बारे में चर्चा होगी, और वो ये है कि जब गुंजन आपसे पूछती हैं कि मैं एयरफोर्स में जा रही हूँ बिकॉज मैं पायलट बनना चाह रही हूँ, मुझे मेरे अंदर से पेट्रियोटिज्म की भावना नहीं है, तो क्या मैं am I being honest about the whole thing? और जो उनको आप बताते हैं कि जो देशभक्ति है वो सिर्फ स्लोगन्स में नहीं है, वो आप किस तरीके से, किस ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश को, वो देशभक्ति है. I think that is a beautiful message that one can take away from the film. कुछ अगर आप बताना चाहें उस पर्टिकुलर सीन के बारे में, कितना वो क्रूशियल है. अनूप जी ऐसे ही हैं, जो अनूप सक्सेना है पिताजी, मैंने उनके बहुत सारे वॉइस नोट्स और रिसर्च के दरमियान मुझे शरण ने प्रोवाइड किए थे. तो अनूप जी बिल्कुल इसी अप्रोच के व्यक्ति हैं, और वो बहुत सुंदर लगा मुझे पढ़ के वो लाइन. यार वो मतलब अगर मैं ट्रैफिक रूल्स मान रहा हूं तो मैं देशभक्ति कर रहा हूं.
एज सिंपल। अगर मैं ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स पे कर देता हूँ तो एक्स्ट्रा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी। कोई भी बंदा, जो भी काम आपको दी गई है जिम्मेदारी, अगर उस जिम्मेदारी को सिंसियरिटी से आप करते हैं, ये अनूप जी का थॉट है और ये स्क्रिप्ट में शरण ने इनकॉर्पोरेट किया था। मुझे बहुत सुंदर लगा वो लाइन, वो आइडिया, और वो है, आपको भी उसका असर हुआ या अच्छा लगा तो नहीं, बहुत वाजिब बात है। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात है। और आपने क्या इस फिल्म के लिए आपने क्या कुछ फिजिकल कुछ एक्सरसाइज भी करी है? यू लुक थोड़ा आप स्लिम ट्रिम लग रहे हैं काफी। नहीं, वो जब जानवी बहुत करती थी ना, तो उसको देख के ना मेरा ऐसे ही कैलोरी मतलब वेट लॉस हो रहा था उसको देख के। नहीं, बट आप definitely you look fitter than that. All right, so Janhvi, congratulations for a very fine performance. Thank you so much. I think a lot of girls they will identify with your character and the grit and determination that you display in the film, and even the way the entire flying of the helicopter part. I think it looks very convincing. You have a very important dialogue at a very crucial time when you tell Vinit's character कि मैं एरोप्लेन उड़ाने आई हूँ, उठाने के लिए नहीं. I think that's a beautiful message. That's very well said. How crucial is the spirit behind anyone's work, irrespective of the gender, rather than the physical prowess that one can possibly have. I mean, I think that's the crux of the film. I think from the start, even when I met Gunjan ma'am, one of the first things that I realized was that the way that she was brought up, gender barriers and social norms about gender were never an obstacle in her mind. The way Anup sir brought her up, उनके दिमाग में कभी उनको ये नहीं लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ या ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है मेरे से. तो she never accepted that it was an obstacle or a challenge. So when she entered an environment where so many people around her thought that ये लड़की होना एक कमी है, ये आपके लिए इस environment में it'll stop you from getting where you want to get, she couldn't, I don't think it was natural for her to wrap her head around that. And you know, that's the thing, it wasn't an obstacle for her in her head, so it didn't become an obstacle for her in her journey either. I think that she fought against it, even though she fought against it silently and through her work. And I think that's kind of the point that you know, we're driving home, not driving home, but I think that's the point that the film is making also, that hard work at the end of the day gets you where you want to get, despite whatever. I mean, what bigger obstacle is there than what Gunjan ma'am faced? But she still reached where she wanted to reach. Ayesha, a very fine performance from you. You have, I think, a very crucial dialogue. I think that should stay with people. And when you say that अगर सारे बच्चे हैं, अगर वो घर पे बैठ जाएंगे तो फिर देश के लिए कौन लड़ेगा? And you say that in a very matter of fact manner. And even though since the beginning you were not really in favor of your daughter going into the army, how was your experience of this? Because you know what happens is that mother's role is very crucial for anyone who's joining army or the defense forces. Because if they are not strong, if they don't give them the permission or the encouragement, it'll be very tough for the children to go into defense force. I think that as a mother, if you have one child, it's scary enough, and then you have more, and then it's scarier. Because once I became a mother, I realized what it meant when my mother-in-law used to say कि मेरे बेटे ने खाना खाया, and I'm like, Kumud is 40, so how, you know, he'll eat. But once I had my son, I realized how much it matters कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, is he safe, वो खेलने से आया कि उसने हाथ धोए कि नहीं धोए. So it's that basic emotion that carries on in the film of the mother, that एक बेटा तो है, you know, अब बेटी भी जा रही है, so that fear sort of holds her back. But I think it's not really her thinking, but I think it sort of confuses her a little bit, the emotion of being a mom, as opposed to then finally when it happens, the pride that comes with it, because she is an Air Force wife as well, you know, so that way. Armed forces. So Angad, how do you look at the brother's character? He's not coming from a negative space. Maybe it is coming from a protective space. Protectiveness is stemming from this entire patriarchal system that we have, that girls can do this and girls cannot do this. How did you understand your character? First of all, I would like to say that it was not easy, because you know,
वी ऑल हैव सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन आवर पर्सनल लाइफ, और जहाँ से हम लोग आते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, वो जो हमारी यादें हैं वो उनको टाइम लगता है टू कम बैक, एंड दिस क्रेडिट आई विल गिव शरण, बिकॉज ही शेयर्ड हिज ओन एक्सपीरियंसेस। मेरी पहली मुलाकात शरण के साथ हुई तो वो 5.5 घंटे की रही, रेरी लाइक फर्स्ट टाइम हम जब मिले तो हम 5.5 घंटे एक दूसरे से बात ही करते रहे, and he shared a beautiful relationship that he had with his own sister, and then because of that it helped me also dig in deep to my experiences with my own sister. फर्क बस इतना है कि मेरी जो बहन है वो 1.5 साल मेरे से बड़ी है, और यहाँ गुंजन के साथ जो अंशुमन का किरदार है वो गुंजन शायद 2.5 या 3 साल अंशुमन से छोटी होंगी. So I feel that there's a difference in the age. If you are an older brother to a younger sister, obviously you feel very differently. You feel protective, you love your sibling a lot, but you also technically play, there is a father, but you technically with unknowingly start playing a other figure's role to your own sister, a young so I feel that kya ho jata hai, it was beautiful because Pankaj sir's character is such where he gives all the confidence and he boosts her morale and is all for her, but I feel Anshuman has been literally the mirror of society for Gunjan. He's extremely realistic because he himself has faced a lot of rejections, lot of जो सारी कठिनाई हैं, जो obstacles हैं उसकी लाइफ में आई हैं, as being a man in the army, so he gets it, he understands the emotion which his sister is going to go through now. एक चीज होती है कि आप सहानुभूति देते हैं, दूसरी चीज होती है कि क्या आप तैयार हैं mentally. A lot of people are very talented, yes, but are they mentally strong or not? Can they go through that journey of and that too in the 90s where you had to find your feet in a man's world, literally it's not easy. आज भी when you see a powerful woman, इंसान जो है थोड़ा backfoot पे रहता है, but I feel that at that time for somebody to prove her worth, to come find her own feet, to first of all believe that she is good herself, and second is to make other people believe that she is good. मतलब ये क्या होता है, जब तक आप अपने खुद के हुनर में विश्वास नहीं रखेंगे, लोग आपके हुनर में विश्वास नहीं रखेंगे. So I feel that is a beautiful arc, and he's an extremely realistic person. He backs his sister to the hilt, but he doesn't know whether she is mentally or emotionally ready to take such a big challenge on. विनीत, आप जिस भी किरदार को निभाते हैं, आप उसमें पूरी तरीके से रम जाते हैं, उसको आप अपने अंदर पूरे तरीके से उतार लेते हैं, यू बिकम दैट कैरेक्टर. तो एक एयरफोर्स पायलट का किरदार निभाने के लिए आपने किस तरीके की आपने तैयारी करी? थैंक्स टू शरण ने सारी चीजें प्रोवाइड कराई थी, और मैं मेरे डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता हूँ. शुरू में खूब सारी बहस करता हूँ, लेकिन वो बहस जो है कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है मुझे खुद को अपने बारे में कह पाने में डायरेक्टर से, और डायरेक्टर को समझ पाने में कि वो फिल्म के लिए क्या सोच रहा है, किरदार के लिए क्या सोच रहा है. तो अगेन थैंक्स टू शरण. बाकी एयरफोर्स के अलावा जो ज्यादा डीपर है यहाँ पे मेरे किरदार में, जो मुझे अट्रैक्ट करता है, कि दिलीप सिंह की सोच. वो एक एयरफोर्स ऑफिसर है, सक्सेसफुल है, लेकिन ये सोच कहाँ से आती है? बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी 2 बहनें हैं और दोनों स्पोर्ट्समैन रही हैं, तो मैंने उस चीज को महसूस किया है कि कितनी मुश्किल आती है अगर वो कुछ अलग हटके करना चाहती हैं, तो उसके आसपास का पूरा समाज यही कहता है कि मत करो. और ये मैंने देखा था, तो यहाँ एक मौका था कि कुछ उल्टा करते हैं. और अपनी इंडस्ट्री का मजा यही है कि बहुत सारी जिंदगियां जीने को मिलती हैं एक जिंदगी में, और उसकी वजह से बहुत सारे अनुभव होते हैं. बिकॉज ये क्यों दिलीप सिंह की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, देन आई थॉट कि ये आता कहाँ से है. तो मुझे जो चीज समझ में आई कि दिलीप सिंह गलत आदमी नहीं है. Exactly. जो फिल्म में आपने देखा होगा कि अगर पराठा लाना है तो लड़की लाएगी, Right. या डाइनिंग टेबल पे कुछ सर्व करना है तो लड़की लाएगी. तो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, उसमें जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वहां से ही हम कुछ सीखते हैं, और जो हम सीखते हैं उनमें से ही कुछ हमारा बिलीफ बनता चला जाता है, और धीरे धीरे वो बिलीफ हमारी आदत बन जाता है. फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी गुंजन सक्सेना को उसके सपनों की उड़ान भरने के पहले उसके पंख काट देते हैं. और हम ये नोइंगली नहीं करते हैं,
हमें लगता है हम सही कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो एक बड़ी खूबसूरत चीज थी दिलीप सिंह के किरदार में, और वो करने में मजा आया। इनफैक्ट जानवी ने बहुत मेहनत की है, और जानवी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मैंने कभी जानवी को पूरी शूट में रूम ही नहीं दिया कि ये मुझसे इजी होके बात करे, तो वो अनइजीनेस बनी रहे, क्योंकि वो दिलीप सिंह और गुंजन सक्सेना के बीच की केमिस्ट्री है। Okay, I think that's wonderful. As an actor, I think that's wonderful. Okay, Manav, you play a very positive character. I would say a very professional character. And you don't look at anyone from the perspective of their gender. You rather look at the fact that whether they are competent enough or not, and on the basis of merit. Tell us something about your preparation, because there are some certain technical languages involved as well, and which I'm sure must have been tough to get a grip on. टेक्निकल लैंग्वेज तो सारे रट्टे ही थे सर। सो जितना भी किरदार में कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा का जानता हूँ, वो शरण की सोल के थ्रू जानता हूँ, उसके पैशन के थ्रू जानता हूँ। डेफिनेटली वी आर डायरेक्टर्स एक्टर, कहीं ना कहीं कलम से कहानी शुरू होती है और डायरेक्टर पे खत्म हो जाती है। हम बीच में काइंड ऑफ पपट रह जाते हैं। सो जब वाह वाही मिलती है तो वो पपट सबसे पहले उछलते हैं। सो कहने के लिए मैंने किया था। तो आई एम लकी बेसिकली। मेरा ये मानना है कि सब कुछ हुक्म के अनुसार होता है। सो आई एम लकी कि मैं उस जगह पर पहुंचा। आई एम लकी कि मुझे इतनी बुद्धि मिली कि मैंने इस फिल्म को हाँ किया। सो कई बार आपको ऐसी चीजें भड़काने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं ये छोटा रोल है, बड़ा रोल है। सो आई एम noticeable. It stays with you. इट स्टेज विद यू। बट कोशिश यही रही है कि जितना मैं कर पाऊं, कोशिश ये रही है कि जितना शरण सोचता था उस किरदार के बारे में वो पूरा उतर पाऊं। एंड आई हैव गिवन माय बेस्ट। तो इसलिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो आई एम वेरी थैंकफुल। No, I really like this. And when I was told that you are part of the team today, so I was quite excited to just talk to you, because you're the character which is the heroic character. You know? It's like there's a lot of positivity in the way you're emitting.